अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इश्ता किशोर ऑल इंडिया रैंक IAS टॉपर UPS रिजल्ट 2022। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई साहब। टॉपर लड़की है और उनसे ये जो सवाल पूछे जाएंगे किस तरह जवाब देती है, मॉक इंटरव्यू है मेरे ख्याल में। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। Yes, sir. इशिता किशोर, Yes, sir. ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। Yes, sir. यू बिलोंग टू सिकंदराबाद, हैदराबाद। Yes, sir. My birth was over there. ओके, नाउ वेयर आर यू लोकेटेड? So my current residence is in Greater Noida, Uttar Pradesh. ओके, हाउ कम? So actually, my father was in the Indian Air Force. So during my birth, he was posted in Sikandrabad in Telangana, and after his demise, Greater Noida. वी आर सॉरी दैट योर फादर इज नो मोर, बट व्हेन डिड ही पास अवे? So this was 2004. 2004? Yes, sir. So I was 7 years old at that time. ओके ओके ओके। एंड what rank did he enjoy in the Air Force? So he was Wing Commander Sanjay Kishore. अच्छा अच्छा, विंग कमांडर थे। Ji, sir. What is the officer hierarchy in the Air Force? So you begin as a flying officer, हाँ, then you are flight lieutenant, then you are squadron leader, then wing commander, the rank at which my father was. Then one promotes to group captain, then air commodore, and so then we have air vice marshals, and then air marshals. So. what do you think of the Joint Command? Chief of the Defence Staff. Sir, I think it is a step in the right direction Mhm. because my last, although very small exposure to the Indian Air Force, my father's last posting was in Port Blair. And Andaman and Nicobar is a tri-services command. And such sort of coordination and unity in terms of operations goes a long way in ensuring that correct decision making is taken. Mhm. You did your high school from the Air Force Bal Bharati School. ये जो खान Lodi मार्केट के Road. पास है? Yes, sir. अच्छा अच्छा। And you did your +2 from the same institution. Yes, sir. Then you did your BA Honours Political Science, Indian Economy, Political Science, Development Theory and Public Economics, Macroeconomics from the SRCC. Yes, sir. Tell us something about SRCC, So, Sriram College of Commerce. Yes, sir. So, the Sriram College of Commerce is one of the foremost institutes in India. It comes under the Delhi University and it is very famous among people because of its record placements. But other than its placements, I think the academic rigor at the institution is great and it offers a number of extracurricular opportunities to the students. And one thing I would like to point out that was unique about my institution was the kind of entrepreneurial spirit it generated in each one of us. We were given autonomy with our societies, we raised funds, we conducted our activities, and it was a great learning experience. Who was Sriram, after whom the college is known as Sriram College of Commerce? Sir, it is known after Lala Sriram, and he was an industrialist. And at that time in 1927, he had set this college up in Daryaganj. And later it moved to Maurice Nagar in Delhi University. What sort of India do you envision in 2047? Economically, socially, politically, militarily, and technology wise. What sort of India would there be in 2047?
So to begin with, if there is one point I want to start with, I envision in India in 2047 where women are doing well socially and women have equal opportunities, whether in the services, whether in the private sector or in terms of startups. Any sector, women should have equal opportunities socially. Sir, economically, while the short-term dream is of a 5 trillion economy, I envision India to increase its share in the global trade by 2047. So politically, India's civilizational culture can be taken a long way, and it can spread the message of not just peace, but also a sense of fraternity and brotherhood, which is also the theme of G20, which is Vasudev Kutumbakam, that the whole world is one family. So technologically, India is upping its operations, and by 2047, I envision India to be a state-of-the-art, to have state-of-the-art technology, whether militarily, whether in Fine, cybersecurity. fine. What are your views on marital rape? Sir, I feel rape is rape, and whether within marriage or outside, it is non-consensual, and it must be condemned. Now जो there are. अमिताभ बच्चन ने पिंक में कहा था, जी sir. when a woman says no, it is a no. Sir, his famous dialogue was that no in itself is a statement. Okay. And it does not need any backing. It does not need any explanation. So I agree with him. And while there are a number of repercussions in terms of how we will find out false cases, frivolous cases, how this will be implemented, there will be a number of challenges. Fine, Ishita, fine. What are your views on the reservation of 10% for the economically weaker sections, other than the scheduled caste and scheduled tribes? Sir, recently in the Janhit Abhiyan versus Union of India, Supreme Court had upheld the economically weaker section reservation of 10%. Sir, now we are shifting from a reservation system that was based on accidents of birth to now accidents of life. And it might be temporary, the economic status of someone might be temporary. Sir, in a modern economic world determined by globalization. Fine, Ishita, fine. You can it. Tell us something about the Rotary movement. You were in the Interact Club. Rotary movement. Sir, the Rotary International brought together people. Who founded it? When? How many branches are in India? Anything? Sir, I am not aware. There are some major achievement with Rotary and Lions had in society in India. Can you recall? So major. Sorry. Major impact on society in India. They did a major voluntary work all over India. Sir, no, sir. Polio eradication. Now, PSIR, tell us on what principles our foreign policy is based. What are the core principles, not objective principles? Sir, after the independence, our foreign policy was determined by Panchsheel principles and in our neighborhood. And beyond that, it began with the non-alignment movement that irrespective of the powers in the world, India will not be aligned. In Panchsheel, there is one principle, non-interference in other countries' affairs. Do you think in practice we have followed it in our neighborhood? Think for a moment and then answer. Sir, there has been a lot of contentions on this topic, whether India has been interfering in its neighbors. Elaborate, give instances. So, for example, in Nepal, the development of the constitution in Nepal, the 2013 blockade in Bhutan, the 2015 blockade in Nepal, in Sri Lanka. So, there have been debates on this, whether India is interfering. Sri Lanka, the IPKF gives your assessment. Did Sri Lanka made a fool of our leadership at that time, in retrospect? Sir, I would not say fool per se, but it was an incident of strategic miscalculations at that time. And I don't think India is interfering per se, but given that India's size
in the neighborhood, it has to take responsibility. But why should India bother? Let them do whatever they want with their Tamils. Why is India bothered? Sir, because regional security is paramount to India and its neighborhood. Sorry, sir. No, regional security came later. But what is the other core interest of India? There was an impact on India itself. What was that? Sir, in the Sri Lanka case? In Sri Lanka. Why are we so concerned about Sri Lankan Tamils? Sir, because it has a domestic psychological impact in Tamil Nadu, and people there are psychologically linked with the Tamils in Sri Lanka and want welfare and justice for them. So it becomes a domestic political issue for India. Do you think these assassins of Rajiv Gandhi should have been pardoned by the Supreme Court or on the advice of the Tamil Nadu government? Sir, I think that in any modern democracy, the idea of prisons is reform. And even as Gandhiji had held that modern prisons will be the schools for reforming the minds of the people. So it is. But there is capital punishment in India. It is because of it is in our constitution, in our law, and everything. So don't go in the fundamental principles that when there is capital punishment, the people who assassinated a Prime Minister of India, should they be pardoned for some whatever reasons? Sir, by even the in same logic, the rapists of Bilkis Banu also should not have been released. Fine, it's a fine. Ishita, you graduated in 2017. Yes, sir. So what you are doing after that? So after my graduation, I started working in risk consulting in Ernst & Young for 2 years. And thereafter, I started my preparation for the civil services examination. I see. Okay. This is my third attempt. Okay. And last time you couldn't come up to interview. No, sir. This is the first time I gave mains and Okay. qualified mains. Okay. You were, you are related with 3 states actually. Your mother, father from Bihar, you are now in Greater Noida, Yes. UP, and you born in Telangana. So can you compare the 3 states? What are the political issues, social issue, economic issue of the 3 states? And where you would like to live, finally, suppose you give a chance. Sir, starting with Uttar Pradesh, it is now becoming the powerhouse of Indian economy. It contributes 8% to India's GDP. But compared to Telangana, it has a very low per capita income. Sir, both UP and Bihar, being in the alluvial region, don't have access to as many resources, mineral resources, as Telangana does. Sir, Telangana is also home to Hyderabad, which is one of the IT hubs of our country and attracts a lot of investment. Whereas UP and Bihar do not have such a powerful center for attracting investments. Sir, culturally, while UP and Bihar are similar, though not same, they are similar. Telangana has a different history in terms of their political struggle, in terms of their separation with Andhra Pradesh, and now their strive for development. Now, Bihar and Uttar Pradesh, they are facing one problem, that is flooding every year. So, what you will do, suppose you are a district magistrate in Madhubani district, or maybe Bagh district, or what you will do there in Bihar, to minimize the impact of flood? Sir, as the district magistrate, I would divide my plan of action into 3 areas. I would take some immediate steps. That would be, firstly, that people should be aware. These floods are not a surprise anymore. They are periodic. They can be expected and predicted during certain seasons. So people should be prepared. And for that, I will take some preventive measures like awareness programs and to equip the people. Sir, in the medium term, I will try to build some embankments, because since the rivers are changing course very fast, so annually or periodically, these embankments also have to shift course. So this will be in the medium term. And do you know the Sindai framework? yes, sir. What is that? And in which year it was enacted?
Sir, I cannot recall the year, but Sendai Framework was signed in Japan under the United Nations Disaster Risk Reduction Program, and it issues certain guidelines and principles on how disaster So management. what are these 4 priorities? Yes, it is having some priorities and goals, not guidelines. Yes, sir. So what are the priorities? 4 priorities are there. Sir, they were on the lines of preparedness, action taken during the relief, mitigation, and In 15th Finance Commission, there is something, new came for disaster management. Do you know that? What is that? sir, forest and ecology were given a weightage. Disaster management. Fine, Ishita, fine. आप पूछे. Okay. Ishita, Ishita, you've been very good in sports. Yes. How come? Sir, What attracted you to sports? Sir, first it was a push factor from my mother who wanted me to do everything, and secondly, sir, it was also my school which provided a lot of opportunities. For example, at 6 a.m. I was doing football coaching prior to school hours, and after school hours I was doing basketball coaching. So I was very active, and I started loving it so much that I could not let go of it despite having my boards exam also. So till the last day I have played sports. Okay, you think in India the pressure on children from the parents to perform extremely well is too much? Is it good for the kids? Sir, I agree that Indian parents can get a bit competitive when it comes to their children, and they seek a lot of pride in what their children are doing. But sir, there is a need for a balance. We cannot push the child too far and outside their interests. For example, my mother was pushing me, but in areas where I had interest and where I had potential. And it was not toxic to say, it was nourishing. It was encouraging. So there must be a golden balance between the push and taking a step back. Do you think your armed forces background has contributed to nurturing of your personality better than if it would have been a civilian affair? Sir, as a child of an armed forces personnel, I am very proud of my heritage, and I completely agree that it has shaped my personality, and it has shaped the kind of upbringing I will have and the activities that I will undertake. What do you think about the new reforms in armed forces recruitment, Agniveer and Agnipath? What are your views on this? Sir, the Agniveer, which is a tour of duty format for short-term recruitment, sir, with the larger picture, it is a step in the right direction because all modern nations and modern armies like United States have a similar pattern. And this will also reduce not just the burden of the social security on the public exchequer, but also will reduce the average age in the armed forces. But sir, I think there could have been some improvement in the way it was conveyed to the public because it led to a massive uproar. Okay, now, is it who said that Battle of Waterloo was won in the playfields of Eton? Sir, I'm sorry, I'm not aware. You're not aware? Have you read British history, something about British history? Sir, a little bit, but I'm not aware. The famous lines. Battle of Waterloo, do you know anything about Battle of Waterloo? Sir, I may have read, but it's not actively there. Who was the first Indian in the armed forces to get a Paramveer Chakra? So I don't know. Any name for who won Paramveer Chakra? Sir, Air Marshal Subrata Mukherjee, he won the Paramveer Chakra. Okay, I'm not sure. Fine, Ishita, fine. Ishita, your optional, I can see, is political science and international relations, Yes. PSIR. You tell me, in states, all states, you can say there is a chief minister and governor. So what is the need of governor? Because most of the work is being done by the chief minister and ministers. So why governors are appointed? Sir, India follows a model of dual executive where the head of the government is different from the head of the state. Sir, the role of a governor is paramount in the governance of a state because it ensures continuity.
and the governor is also the binding factor and the common factor across the nation, which ensures an India factor in the governance of the states. So, sir, for the unity and integrity of India, the position of governor is integral. But in several states, you must have seen that there is a tussle or problem between the chief minister and governor. So, how to solve this issue? Sir, I think a solution in this regard would be that, as many commissions have suggested, for example, the Sarkaria Commission or the Panchi Commission, that there should be a panel of members of public prominence who must be there, and they can be, from that list someone can be selected, and it should be in consultation and in agreement with the state governance also, because this will ensure that they can work hand in hand, and there is both checks and balances, but there is also coordination. Okay, have you seen Hyderabad? Means when you grew up? Sir, I was just 1 year old, and then we had moved. Because I wanted to ask one question related with the Charminar. Anyway, because I have seen many times. You have done your BA honors in this economics, several economics papers are there. So what are the factors which really control Indian economy? Any 2-3 factors, not full paper, you should discuss. Sir, in the macroeconomic scenario, the factors which control the Indian... Microeconomy you have written separately. Indian economy, microeconomic, macroeconomics, I understand. But what is this, public economics? You have written, that is a separate paper? Yes, sir. So what do you mean by the public economics? So public economics centers around the distribution of resources in a society and how the taxation system must function to cater to the society. So that is not under micro or macroeconomics? Sir, micro and macro form the foundational basis on which these subjects are studied, and on those theories we understand how public economics works. Okay. For what theory Abhijit Banerjee got the Nobel Prize in economics? Any 2 points? Sir, it was the randomized control trials, and sir, they created groups of people and analyzed their responses with certain incentives. So this is also helpful in public economics. Okay. You name any 2 women in India, powerful women, maybe IAS, IPS, which have impressed you, mentioning their main 1 or 2 contributions. So can I take a moment? Yes, because you are going to join civil services. Yes, sir. And being women, you should know at least some of these role models, or you can consider them as your role models. So the first name that comes to my mind is IPS officer Lakshmi Singh. So she is the first commissioner of the Gautam Budh Nagar district. And in the commissionerate system of last 7 years, first time a female officer has been appointed. And I feel she can actually handle all the issues of crimes against women in the NCR region. But Gautam Buddha and Noida are the main centers of corruption. So what she did for that? That's why I was asking some important, very important national level contribution. Any woman from IAS, IPS? If no, then you can say no problem. Now, there was one meeting on climate change in US, and there one very famous economist said that in India, women are responsible for climate change. So, can you guess what he was referring to? How women can be responsible for causing climate changes in India? Fine, thank you, Ishta. Please wait outside for 2 minutes. Okay. We'll summon you again. Thank you, sir. चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब, यहाँ पे ना लड़की की जो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत कमाल का था, उसका बोलने का स्टाइल और उसके जो प्रोनाउंसिएशन, जो भी वो वर्ड बोलती थी, कमाल था। अब देखा जाए तो पता नहीं वो जो दूसरे इंटरव्यू लेने वाले थे उनकी इतनी समझ नहीं आई बात, क्योंकि
पूरे वर्ड जो हम मतलब बोलते किसी हैं आवाज कि में ऊपर गुजर गए या वो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम थी जैसे भी उनके कई वर्ड जो है भाई हमें समझ नहीं लगे, लेकिन जो लड़की थी उसके वर्ड जो है वो प्रॉपर वर्ड के साथ वो बोलती है बिल्कुल ऐसे। और कॉन्फिडेंस लेवल भी कमाल का था। पहले हमने एक वीडियो देखी थी, वो लड़की जो थी ना वो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो था लूज था और दूसरे एक तो अक्सर वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, वो सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रही थी। वो जब भी कोई सवाल पूछते थे वो परेशान और एक जो आवाज जो है वो उसकी दबी दबी थी। अब इनकी बात करें तो भाई साहब एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और एक होता है ना एक और इनकी अच्छी चीज लगी मुझे कि एक जब सवाल पूछते हैं ना तो बंदा अक्सर ऐसे सोचता है कि ऐसे मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कैसे पति ना सिर्फ अपने आप से बनाने की कोशिश करो, लेकिन ये लड़की अच्छा को बनाती अच्छा इनका देखा टाइम लेती है थोड़ी सी बनाने में। अच्छा इधर नहीं देखना, थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा ऐसे सही बात है। और सवाल का और जिस चीज का नहीं इलम होता उसका जड़ से बोल देना सर सॉरी। हाँ जिस चीज का इलम होना था ना उसको थोड़ा सा ना माइंड में सोचना फिर उसको रिलेटेड आंसर देना, कमाल कर दिया। असल में जज पता है जज क्या करना चाहते हैं कि जब इनको कोई भी अफसर किसी बड़ी पोस्ट पर लगाया जाएगा तो इनका रवैया क्या होगा, वो इनकी पर्सनैलिटी से इस चीज को ही जज करते हैं। भाई एक तो बंदा कॉन्फिडेंट हो तो वो जो भी डिजास्टर आता है उसको अच्छे से कवर अप कर पाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ ऊपरी जो प्रेशर होते हैं या कुछ जो वहाँ के इलाके के लोग होते हैं वो प्रेशराइज कर लेते हैं। एक कॉन्फिडेंट बंदे ही वो अच्छे से फैसला ले सकता है। जिस तरह उन्होंने एक वो फ्लड वाली बात की कि अगर ऐसे इलाके में आपका शिफ्ट का पोस्ट हो जाए कि जहाँ पर फ्लड आते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, तो उन्होंने बताया कि जो इलाका है वहाँ पे फ्लड जो है वो हर साल आते हैं, लाजमी आते हैं। तो उसके लिए एक तो लोगों को आगाह करना पड़ेगा, 3 सेक्शन बनाने पड़ेंगे और जब वो पानी हट जाता तो उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो एक मतलब पहले से कर लेनी चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो। फ्लड में आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। और पाकिस्तान देख लो हर साल वो पाकिस्तान तो 47 से लेकर आज तक इनमें अवेयरनेस ही नहीं आई। वो हर साल इतना पानी जाया हो जाता है, उल्टा नुकसान हो पानी जाया जाता है, गाँव के गाँव बह जाते हैं उसमें। वैसे पिछले साल देखा था ना यूपी में फ्लड है, तो वो एक वीडियो देखी थी जिसमें वो योगी आदित्यनाथ जो हेलीकॉप्टर से वो फ्लड का जायजा नहीं लेते। तो ये भी भाई फ्लड इतना बड़ा देश है, अगर फ्लड आ जाए तो वही नुकसान भी तो होता है। उसके लिए थोड़ा की रिपोर्ट इसके अंदर बोला जो फ्लड आया था ना उस वजह से नुकसान पाकिस्तान का इतना भी जो है ना कैद सारी बढ़ सकती इस साल। मुमकिन है क्योंकि इतना रकबा ज़ेरे-आब आ चुका था, इतना रकबा कैद पड़ने के चांसेस हैं अभी भी। हाँ अभी भी होना है। चलो ये क्या तो रशिया से आ रही है ना गंदम, देखो कितनी एक मैनेज करेगी भाई साहब, पॉपुलेशन तो देखना। तो बाकी बात आर्म फोर्सेस के रिलेटेड जो हुई तो उनके बच्चे जो है भाई सिविलियन से उनका माहौल ही बहुत ऊपर लेवल का होता है। उनका तलीम होती है, एक तो वो होते हैं ना कोई जो रूल को फॉलो करने वाले, बिल्कुल वो उससे हटना नहीं, जो नियम बने टाइमिंग रूल जी वो फॉलो करते हैं। आर्मी में ये चीज और वो कह रही थी कि मुझे फख्र है इस बात का, तो सही बात है विरसे से ना। एक वो रेप वाला एक पहले भी एक काफी अर्सा पहले एक केस सुना था, एक मूवी भी देखी थी मैंने जिसमें वो चलता है कि बंदा हस्बैंड जो है ना वो और लेडी जो थी ना वो केस कर देती है कि मेरे साथ ना हस्बैंड ने रेप किया है। कहता है हस्बैंड ने रेप कैसे कर दिया? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जबरदस्ती जो है आपस में असल में रिश्ते तो एहसास के हैं ना। सही बात है, नाम तो रख लिया कि हस्बैंड वाइफ है, अगर एक दूसरे का एहसास ना करे, उनमें मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो तो वो रिश्ता चलता नहीं है। उसमें जबरन चाहे मियाँ जी करे या बीवी करे, जबरन ज्यादती तो फिर दूसरे की जब मर्जी नहीं शामिल होगी तो वो ज्यादती तो ज्यादती काउंट जाती है, बिल्कुल जाती है। वैसे ये जो ऐसी बातें जो होती है ना कि एक रिश्ता जो आप एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो वो रिश्ता नहीं होता है। सही बात है।
वो तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जबरदस्ती की कोई भी चीज है वैसा वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ऐसी बात एक दूसरे का कुर्बानी थोड़ी सी देनी पड़ती, लेकिन ये तो नहीं भी हमें जबरन भाई पता नहीं कि कानून इस बारे में क्या कहता है कि हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड जो है वो, क्योंकि देखा जाए तो हस्बैंड जो है वो सेक्स करता है अपनी वाइफ के साथ करता है, तो वो क्या रजामंदी तो दोनों की होती है ना उसमें। लेकिन एक और बात भी है ना, उसकी कानून में सजा क्या होगी, मैं वो सोच रहा हूँ। अगर किसी दूसरी लड़के के साथ रेप हो तो वो जो वो टेस्ट करवाएंगे, रेप हुआ है ये, उसके डीएनए मिलेंगे सारा कुछ, तो इसका वो कैसे जज करेंगे कि भाई साहब रेप हुआ है, क्योंकि हस्बैंड तो पहले भी सेक्स करता रहता है। उसने बोल दिया, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नशा करके आ जाते हैं, नशे की हालत में वो मेडिसिन ले लेना है, उसके बोलने पे अदालत सजा थोड़ी देगी, वो फेक भी तो हो सकता है। तो गुस्सा निकालने के लिए भी तो चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें मुमकिन है, लेकिन भाई ऐसा रिश्ता चलता नहीं। मियाँ बीवी का मैं कहता दुनिया से सबसे एक अलग रिश्ता है, माँ बाप का भी रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन मियाँ बीवी का मैं कहता हूँ उससे भी टॉप पर होता है, बिल्कुल एहसास का रिश्ता होता है। तो इसमें एक दूसरे की ना जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर सही बात है, मियाँ का दिल है तो भाई बीवी का भी हक बनता है कि कुछ ना उसकी जरूरत है, भाई साहब हर बंदे की जरूरत है, शादी करता भी इसलिए बंदा, चलो जरूरत है तो वो उसका ख्याल रखें। अगर आप जरूरत उसकी पूरी नहीं करेंगे तो वो और जगह मुंह मारेगा, तो ये थोड़ा सा ना साथ में मिलकर चलना पड़ता है, एहसास करना तो पड़ता भाई है। इंडियन के कानून के तहत इसकी क्या सजा और है? अदालतों में मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान में जितने केसेस ऐसे तो खैर नहीं जाते, लेकिन जो भी तलाक वाले केसेस जाते हैं ना, उनमें जजों की कोशिश ये होती है आखिरी लम्हे तक भी कि इनकी सुलह हो जाए। सही बात है, वो यही चाहते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, रिश्ता खत्म ना हो इनका। तो खराबियां हो जाती हैं जब जहाँ पर नफरत पैदा हो जाती है ना भाई, वो घर चल नहीं सकता। नफरत जिससे हो जाती है ना, वो अच्छाई भी करेगा तो वो आपको ना वो मिर्चें ही लगेंगी, बुरा लगेगा। अगर जिससे ये है कि ऐसी चीजें, हालांकि ऐसी चीजें तारक हमारे कल्चर में नहीं है ना इंडिया के। अब जब जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, ये नई नई जो परेशानियां ये सामने आ रही हैं जदीद दौर की वजह से, कल्चर में बिल्कुल हाँ सही बात। बाकी बात की कि 2047 में किस तरह देखते हैं इंडिया को, तो इंडिया मेरे ख्याल में जो हम इतनी वीडियोस देख चुके हैं, जो हमने इधर से सीखा है, तो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा बिल्कुल तकरीबन, और हो सकता है सुपर पावर कुछ खराबी ना हो खित्ते के हाँ, अंदर, खराबी ना हो। अगर इसी स्पीड से बढ़ता जाए तो हो सकता है सुपर पावर भी बन जाए 2050 तक। लेकिन ये भी बात है कि भाई इंडिया में उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी होगी। मैं कहता हूँ 2047 तक तो मैं कहता हूँ 10-20 GB तक तो पहुँच जाएगा इंटरनेट की स्पीड। अभी 6 GB तक जा रहे हैं ना, तो उस वक्त 10-20 तक जा चुके होंगे। दूसरे नंबर ऐसी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं कि जो हवा में उड़ती हों। 2050 का एक मूवी देखी थी 2050, उसमें वो गाड़ियाँ उड़ रही होती हैं हवा में, शायद आपने भी देखी हो। नहीं, इंडिया की थी, हरमन बवेजा थे और उसमें थी दूसरी क्या प्रियंका चोपड़ा, ये थी, और उसमें बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी दिखाई गई। और देखा जाए तो भाई साहब जिस तरह लड़कियों को एजुकेशन में आगे ले जाया जा रहा है, तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब लड़कियां मर्दों के साथ शाना बशाना आपने शायद काम करें। नोट किया है कि नहीं, ये जो रिटायर्ड ऑफिसर ये जजेस जो होते हैं, ये सारे मर्द हजरात ही हैं। इनमें अक्सर हमने इंटरव्यू की वीडियो की है, हाँ, इनमें रिटायर्ड कोई महिला नहीं देखी, और इंटरव्यू जिनसे ज्यादा लिया जाता है वो महिलाएं हैं। ये इसलिए कि उस दौर में लड़कियों को इतनी ज्यादा जगह नहीं मिली, कितने ज्यादा लेवल पर काम नहीं मिला, अभी मिल रहा है। सही, अभी मिलकर एक और बात बता रहा है भाई, जो होता है ना टैलेंट को सामने लेकर आने, वो भी सामने बात होती है। उस हिसाब से लड़के नहीं भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी एजुकेशन, हाँ तो यही बात है ना। हाँ, तो जो डिजर्व करता है आखिरकार सीट तो उसी को मिलनी चाहिए। भाई यहाँ पर भी अभी टॉप जो है कर रही हैं लड़कियां कर रही हैं पाकिस्तान में, कॉलेजों के अंदर, हाँ वही करती हैं। वो एक खानदान के CSS की 5 लड़कियों, पांचों की पांचों ने CSS किया है। क्या बात है, रिकॉर्ड मान लीजिए 5 फैमिली के अंदर लड़के, उन्होंने पांचों की पांचों ने अपने दौर के अंदर टॉप पर CSS किया हुआ है।
तो ठीक ज्यादा है, पढ़ती भी भाई साहब वही है, हमने तो बात मेहनत- करते मेहनत कुछ की देख- अच्छा लगा भाई साहब, काम काफी करो। चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं ये इंटरव्यू देख के। और आप लोग भी काफी भाई बहनें जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एक इंटरव्यू आप भी इस तरह की और भी कोई अच्छी वीडियो जिससे हम भी कुछ सीखें। ये kan मेहनत बहुत करनी पड़ती है मेहनत, भाई साहब। तीन अपनी कंट्री दफा। का नॉलेज, अपने आजू बाजू की कंट्री वो तीन दफा। वर्ल्ड का नॉलेज भाई भाई साहब। साहब 3 दफा, तीसरी दफा दी है। हाँ, तीसरी अटेम्प्ट है उसकी। हाँ, तो मेहनत भाई दिखती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।